अस्सलामुअलैकुम। न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश, ये वर्कबुक 5 है, पेज 33 पर। टेस्ट 1 है, एक्सरसाइज ए, अनसीन कॉम्प्रीहेंशन। ये एक पोइम है, इसे पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चंस हैं, फिर उन्हें सॉल्व करेंगे। पोइम में जिन वर्ड्स को अंडरलाइन किया गया है उन्हें आप नोट करें और उनके स्पेलिंग्स को याद कर लें। ये पोइम एक पायरेट से मुतल्लिक है। पायरेट कहते हैं समुद्री डाकू या कज़ाक को। पायरेट को बकानियर भी कहते हैं। इस पोइम के 5 स्टैंजास हैं। फर्स्ट स्टैंजा पढ़ते हैं। हो फॉर द पायरेट डॉन डर्क ऑफ डाउटी, he was as wicked could be, but oh, he was perfectly gorgeous to see, the pirate Don Dirk of Doughty. His conscience, of course, was as black as a bat, but he had a floppity plume on his head, and when he went walking it jiggled like that, the plume of the pirate Doughty. Oh, he had a cutlass that swung at his thigh, and he had a parrot called Pepperkin Pie, and a zigzaggy scar at the end of his eye had pirate Don Dirk of Doughty. He kept in a cavern this buccaneer bold, a curious chest that was covered with mould, and all of his pockets were jingly with gold. Oh, jing went the gold of Doughty. It's sure he was wicked as wicked could be. His sins they outnumbered 103, but oh, he was perfectly gorgeous to see, the pirate Don Dirk of Doughty. पेज पर क्वेश्चंस हैं, इन्हें सॉल्व करते हैं। What was the pirate like? पायरेट कैसा था? Mention 3 things about his character, not his appearance. उसके करैक्टर के बारे में यानी उसके किरदार के बारे में 3 चीजें बतानी हैं, उसके हुलिये के बारे में नहीं बताना। The pirate was as wicked as he could be. He has a black conscience. He was a hoarder and he was a sinner. B क्वेश्चन है, What did the pirate look like? Describe his appearance. अब यहाँ पर उसकी appearance बतानी है। He was gorgeous to see, handsome, with a zigzaggy scar at the end of his eye. He wore a plume in his head and a large cutlass that swung on his thigh, and his pockets jingled, Jingled, jingled with gold. Question C है, What do you think the following words mean in the poem? इन वर्ड्स के पोइम में क्या मीनिंग्स हैं? फ्लॉपिटी का मतलब है मूविंग फ्रॉम साइड टू साइड। बकनियर पायरेट को कहते हैं। मोल्ड फंगस, प्लूम फेदर। क्वेश्चन डी है, व्हाट इज अ कटलस? कैन यू थिंक ऑफ अनदर वर्ड टू डिस्क्राइब दिस ऑब्जेक्ट? तो कटलस था एक नाइफ। अ नाइफ, sword, blade, dagger, etc. Question E है, What can you say about the rhyming pattern in the poem? Rhyming scheme है stanza 1 and 5 में A और stanza 2, 3, 4 में A और B. Question F है, Which line tells us that the poet liked the look of the pirate? The poet says, But oh, he was perfectly to see. Exercise B का question number 1. Answer these questions from your textbook. Question A है, Why did Robinson Crusoe not take the gold coins from the shipwreck? Robinson Crusoe had no use for gold coins on a desert island. B. What does the student do to prepare for the history test? Writes notes and quotes in order to cheat. Question C है, What did Gerald's brothers want to do to the scorpions? They wanted to kill the scorpions. D. What are some of the things you will need to start a collection of flowers? A notebook, a pencil, an
album or scrapbook, two pieces of hardboard, newspaper and a magnifying glass. Question E है, where did the poet say the skylark's nest must have been? तो इसका आंसर यहाँ पर है, the skylark had a nest unseen somewhere, somewhere, somewhere among, among, among the million stalks of the cornfield. क्वेश्चन नंबर 2 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट. ये जो लाइंस दी गई हैं इन्हें पढ़ेंगे और फिर इनसे रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स देने हैं. ही कर्ल्ड हिज नोज एंड सेड, डियर मी, आई वुड नॉट वेस्ट एन आवर. क्वेश्चन ए है, फ्रॉम विच पोएम आर दीज लाइन्स टेकन? तो ये लाइन्स ली गई हैं सॉर ग्रेप्स में से. हु इज स्पीकिंग दीज वर्ड्स? द पोएट इज कोटिंग द फॉक्स. What did he curl his nose to show? To show he was not interested in the grapes. Question D है, what would he not waste an hour doing? इसका आंसर ये है, upon such mean and common fruit he would not waste his time going after the grapes or eating. Question E है, what did he say in the end? In the end he said, I am sure those grapes are sour, S-O-U-R, sour. Exercise C, question number 1. What is the collective name used for a group of bees? Swarm या फिर hive कहते हैं ग्रुप ऑफ बीज को. अ ग्रुप ऑफ आंट्स क्या है? कॉलोनी. अ ग्रुप ऑफ ग्रेप्स, बंच. अ ग्रुप ऑफ थीव्स, गैंग. अ ग्रुप ऑफ किटन्स, लिटर. क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द नेम गिवन टू द फीमेल जेंडर ऑफ द फॉलोइंग? एक्टर, एक्ट्रेस, लैंडलॉर्ड, लैंडलेडी, टाइगर, टाइग्रेस, होस्ट, हॉस्टेस, एम्परर, एम्प्रेस, बॉय, गर्ल, गैंडर, घूस, बुल, cow, hero, heroine. Question number 3 है, what do the following mean? On the ball, to be alert, well informed. On the mend, to be recovering after an illness. On call, to be available for duty. On edge, to be nervous. Next page पर question number 4. Do you remember these proverbs? Can you complete them? A bad workman blames his tools. Don't pull all your eggs into one basket. Barking dogs seldom bite. Cross the stream where it is shallowest. Exercise D, question number 1. What is an interjection? Explain and give an example. An interjection is an exclamation. Words which show emotion are called interjections. Example, ouch. इसके बाद ये आप साइन डालेंगे, इसको एक्सक्लेमेशन साइन कहते हैं. He stamped on my toe, और एंड में भी exclamation sign डालेंगे. Question number 2. Complete the following table. The first two have been done for you. Quickly, more quickly, most quickly. Hard, harder, hardest. Early, earlier, earliest. Fortunately, more fortunately, most fortunately. Pleasant, more pleasant, most pleasant. Little, लिटिल का लिटलर या लेस भी होता है, लेकिन लेस और लीस्ट ज़्यादा बेहतर है, ये लिखें आप. क्वेश्चन नंबर 3 है, वेयर इन अ सेंटेंस आर एडवर्ब्स यूजुअली प्लेस्ड? एक्सप्लेन एंड गिव एन एग्जाम्पल. Adverbs are usually placed after the verb in a sentence or after the direct object, but not always. Example note करें. He drives carefully in the snow. Question number 4. What adverbs are formed from these words?
polite, politely, affectionate, affectionately, lucky, luckily. क्वेश्चन नंबर 5, इसमें सेंटेंसेस जो दिए गए हैं इनमें जो वर्ब हैं वो आपने यहाँ पर लिखने हैं और बताने हैं कि वो कौन से टेंसेस हैं। पास्ट टेंस के लिए पीटी लिखेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए एसपी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के लिए पीसी और फ्यूचर टेंस के लिए एफटी लिखेंगे उनके आगे। आमिर इज सेलिंग टिकट्स फॉर द शो, इसमें जो इज सेलिंग है वो वर्ब है और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। शी विल कम टू द पार्टी विद अस, विल कम और ये फ्यूचर टेंस है। अब हम सी करेंगे। ही टेक्स द डॉग फॉर अ वॉक एवरी डे, टेक्स वर्ब है और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। दे फिल्म द एक्साइटिंग कार रेस, फिल्म्ड वर्ब है और ये क्या है, पास्ट टेंस है। आई एम डूइंग माई वर्क नाउ, एम डूइंग टेंस है इसमें और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। क्वेश्चन नंबर 6, चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। A, it is not here, George, remarked Paul. Paul remarked to George that it was not there. B, are these your books, Ali? Asked Qasim. Qasim asked Ali if those were his books. C, don't shout, Basit, ordered Saira. Saira ordered Basit not to shout. Question 7, change the following, use would. A sentence, he said, I will work for you. He said he would work for me. B, Maheen said, I shall be very late for the meeting. Maheen said she would be very late for the meeting. Exercise E, composition. ये लेटर है एडिटर के नाम। नेक्स्ट वीडियो में ये अपलोड कर दिया जाएगा। लेटर वाले प्लेलिस्ट में आप इसे चेक कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।